Hello students and welcome to today's biology class. So in the previous class we were discussing about the group which is called as the bryophytes. We have discussed about the liverwort and the mosses. ठीक है, तो प्लांट किंगडम में 5 अलग अलग डिविजन्स होते हैं: थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. So we have already completed the first two, that is the thallophyte and bryophyte. Today we'll start with the pteridophytes. This is the third division of plant kingdom, pteridophyte. So let us start. ना ये जो ग्रुप होता है टेरिडोफाइट, इसके कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं एंड यू विल फाइंड कि ड्यूरिंग द इवोल्यूशनरी लाइनेज एज वेल दे हैव सर्टेन सिग्निफिकेंस. तो उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है प्लांट इवोल्यूशन में, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. आई विल एक्सप्लेन यू दैट एज वेल. सो लेट अस स्टार्ट. द फर्स्ट पॉइंट इज दे इंक्लूड द हॉर्स टेल्स एंड द फर्न. तो इनमें किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं? These are the two kinds of organisms that you will find in this specific group. The horsetail, as you can see the first picture, it appears bushy like a horse's tail, that is why it is called as horsetail. और दूसरा वाला ये है fern. So this you might have seen in some damp areas. थोड़ा rare होता है ये plant, but yes it is found. जहाँ पे moist होता है, damp होता है area, little shady, तो उस टाइप के areas में ये grow करते हैं. ठीक है. So the horsetail and fern are the two types of plant found in pteridophytes. They were the first terrestrial plants with vascular bundle. Now this is the evolutionary significance. ठीक है, तो ये पहले terrestrial plants थे जिनमें vascular bundles देखा गया था, which include the xylem and the phloem. हम लोग जानते हैं कि जितने भी higher plants हैं उनमें xylem और phloem होता है. The xylem is responsible for transmission of water, minerals and certain ions, whereas the phloem is responsible for the transmission of food molecules. Okay, so these two tissues, xylem and phloem together, they are called as vascular bundle. और ये जो vascular bundle होता है xylem and phloem, ये generally higher group of plants में दिखाई देता है, lower group में नहीं दिखाई देता. We are not seeing this feature in the thallophytes or the bryophytes, but it was the first time it appeared in the pteridophytes. So during the evolution of plants, this was a very important step. So that is why pteridophytes become very important when you are considering the evolutionary lineage. Now in which kind of places you will find this kind of plants? You will find them in damp areas or moist soil, shady areas, and yes, in sandy soil also you will find them. तो ये इनका habitat होता है. This type of atmosphere generally favors these organisms. Okay, now let us see how their body type looks like. So what is the plant body look like? Okay, तो इनका जो main plant body होता है, the main plant body is sporophyte which develop spores. ठीक है, तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट बॉडी दो टाइप में डिवाइड होता है, एक गैमेटोफाइट होता है, दूसरा स्पोरोफाइट होता है. सो हियर यू विल फाइंड देयर मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइटिक. ये स्पोरोफाइट्स होते हैं. ठीक है, besides that it is differentiated into the true roots, stem and leaves. ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, रूट्स, स्टेम एंड लीफ. एंड रिमेंबर दे आर ट्रू रूट्स. इसके पहले वाले में ब्रायोफाइट्स में हम लोग देखे थे कि उनका कंप्लीटली ट्रू रूट सिस्टम या ट्रू shoot system present नहीं था. It was not present. In place of roots they were just having rhizoids. ठीक है, but यहाँ पे आपको completely एक true root, stem और leaves देखने को मिल जाएंगे. Okay, so this is how a plant body will look like. इनका plant body कुछ इस तरह का दिखता है. ये आपका stem है. This is the stem which runs parallel to the ground and it will have roots which are attached to the soil, and the leaves will directly arise from the branches, from the stem itself. ओके, तो ये पहले इनिशियली कर्ल होते हैं इनके लीव्स, फिर बाद में जब मैच्योर करते हैं तो दे विल ओपन अप एंड दे विल स्प्रेड आउट. ओके, सो दिस इज हाउ ए मैच्योर लीफ विल लुक लाइक. सो दिस इज हाउ द प्लांट बॉडी इज ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स एंड देयर मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइटिक. They possess well differentiated vascular tissue. So this we have already discussed in the previous slide कि इनका जो vascular tissue या फिर vascular bundle होता है, xylem and phloem, वो well differentiated होता है. Okay. Next point, the leaves can be small, called as microphyls, as seen in Salginella, or they can be large, which are called macrophyls, as in case of ferns. तो इनमें दो टाइप के लीफ दिखाई देते हैं, एक लार्जर लीफ होता है, एक स्मॉलर लीफ होता है. As you can see, the first picture is of Salginella, which is having very small teeny leaves. बहुत छोटे छोटे leaves हैं इसमें. देखिए ब्रांच के दोनों तरफ छोटे छोटे leaves arranged हैं. इनको बोला जाता है microphyls. The smaller leaf arrangements are called as microphyls. But in some plants like fern, you'll find the leaves are larger.
So that is called as macrophylls. ठीक है, microphylls and macrophylls. So these are two type of leaf arrangement that you will see in these organisms, in these plants specifically. Now the sporophyte bears sporangia that are subtended by the leaf-like structure called sporophyll. तो इनका जो sporophyte होता है वो bear करता है sporangium, which later on develops the spores. और ये जो sporangia होता है वो subtended होता है, means it is covered up by leaf-like structures which are called as sporophyll. तो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है उनको बोला जाता है स्पोरोफिल्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इन दिस स्पेसिफिक ग्रुप इज विल फाइंड कि ये जो प्लांट्स होते हैं जिनको हम लोग टेरिडोफाइट्स बोलते हैं, इन सम केसेस द स्पोरोफिल मे बी डिस्टिंक्टली कंपैक्ट एंड दैट इज कॉल्ड एज कोन और स्ट्रोबिली. तो कभी कभी इनका जो स्पोरोफिल होता है बहुत डिस्टिंक्ट होता है, कॉम्पैक्ट होता है, मतलब स्क्वीज होकर रहता है, इट विल नॉट बी वेरी ओपन अप टाइप, एंड इट विल डेवलप इनटू कोनिकल स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज कोन्स और स्ट्रोबेली. नाउ दिस इज कॉमनली फाउंड इन सेलिगिनेला एंड इक्यूसेटम. तो ये कुछ इस तरह का दिखता है, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. एट द टिप ऑफ द प्लांट आप लोग देखोगे जहां पे आपका स्पोरोफिल होता है वो स्पोरोफिल ऐसे कंडेंस्ड कोनिकल स्ट्रक्चर्स में डेवलप हो जाता है, उनको बोला जाता है कोन्स या फिर स्ट्रोबिली. दे कैन बी आइदर मेल और दे कैन बी फीमेल. मेल स्ट्रोबिली भी होता है, फीमेल स्ट्रोबिली भी होता है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द प्लांट बॉडी ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर कॉल्ड एज टेरिडोफाइट्स. Now these organisms do possess certain economical significances. इनका कुछ इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस भी होता है. तो इनका क्या क्या इकोनॉमिक इंपोर्टेंस होता है? नॉट मच ऑफ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, बट यस इन एंशियंट टाइम्स पहले कुछ टेरिडोफाइट्स यूज किए जाते थे मेडिसिनल पर्पस के लिए. Now some of the leaves of pteridophytes are used for the treatment of thyroid or they are used for the treatment of asthma. तो वैसे कुछ केमिकल सब्सटेंस इनमें से निकाले जाते हैं जो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किए जा सकते हैं. दैट इज वन ऑफ द economic importance of the pteridophytes. The second one is they act as soil binders. Soil binders मतलब जब आप किसी pteridophyte को प्लांट करते हैं तो वो सॉइल को होल्ड करके रखता है and it will not allow it to erode. उसका सॉइल इरोजन वो कम कर देता है. So that is why it is called as soil binders. It binds to the soil very tightly. ठीक है, though it does not have a very proliferative root system, but yes, it is a soil binder. They also are used as ornamental plants. Ornamental plants मतलब decorative plants. You might have seen बहुत जगह पे plants use किए जाते हैं for decoration purposes. ठीक है, now as you can see in this picture which is coming up, तो आप different gardens, different offices, malls, even houses, इनमें decorate करने के लिए ऐसे plants होते हैं. So here you can see there is a Buddha statue in this garden, and beside the Buddha statue the ferns have been planted, which gives it a very distinct green and fresh view. ठीक है, तो gardens में, office में, घर पे भी कभी कभी in the houses as well, in the home as well as sometimes in mall and all, बड़े बड़े आपके जो malls होते हैं वहां पे भी आप देखेंगे साइड में कहीं पे ऐसे plants रखे होंगे. तो इनको ornamental plants बोला जाता है because they are used for decoration purpose and they look very beautifully green. But remember they do not bear flowers. इनमें flowers नहीं होगा, इनका leaf design ही ऐसे होता है कि it looks beautiful. So this is the economic importance of the pteridophytes. In the next class we will move on to the reproductive cycle of the pteridophytes. Thank you everyone.